ये है Huawei P40 Pro Plus, one of the most, if not the most special phone in the world right now. इस फ़ोन की प्राइस है अराउंड $1700, लेकिन इसको ख़रीदना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो रहा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फ़ोन को लेने के लिए, यू विल हैव टू इम्पोर्ट इट योरसेल्फ, और PTA के जो सारे हर्डल्स हैं ऑल द टैक्सेस एंड स्टफ, यू विल हैव टू डू दैट योरसेल्फ। एक और डिस्क्लेमर ये है कि इस फ़ोन के अंदर गूगल प्ले सर्विसेज नहीं आती, लेकिन थ्रू सम हैकिंग आई वॉज एबल टू रन गूगल एप्स कम्प्लीटली परफेक्टली, कोई एरर नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी यही केस होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिक्योरिटी अपडेट्स जो उस टाइम पे होंगे जब आप इफ़ यू डिसाइड टू बाय द फ़ोन। इस फ़ोन के बारे में इन डिटेल बात करने से पहले देयर इज़ समथिंग एल्स आई वांट टू टॉक अबाउट। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक लफ्ज़ है कॉल्ड वेरिसिमिलिट्यूड। इट्स अ बिग फैंसी वर्ड जो कि एसेंशली इसका मतलब है बिलीविंग इन व्हाट यू डू। इस वीडियो के लिए आई वांटेड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल वीडियो दैट आई कुड मेक, so that took a lot of hard work and persistence. So I truly hope that you enjoy this video, and I sincerely ask you कि please share the video and please like the video, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो फिर then please like and share there as well. Okay, so the P40 Pro Plus. Let's start with the biggest feature of this phone, the camera. स्मार्टफोन कैमरास के बारे में जब हम बात करते हैं तो Huawei हैज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद द मॉडर्न स्मार्टफोन कैमरा। जिस तरह से Xiaomi ने पॉपुलराइज्ड किया ट्रेंड ऑफ हैविंग अ बेजलेस फ़ोन, और Oppo ने बिग अचीवमेंट्स की इन द फास्ट चार्जिंग, Huawei इज़ द ब्रांड दैट फोकस्ड ऑन हैविंग मल्टीपल लेंसेज इन अ फ़ोन। इन्होंने ये आइडिया पॉपुलराइज किया कि फ़ोन के अंदर मल्टीपल कैमरास होने चाहिए, और आज pretty much हर मिड रेंज फ़ोन और हर हाई एंड फ़ोन के अंदर या तो एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, या एक क्वाड कैमरा सेटअप है, या फिर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से कि Huawei इज़ द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न स्मार्टफोन कैमरा। हर साल Huawei बड़े फीचर्स लेके आते हैं अपनी P सीरीज़ के अंदर, एंड देन ओवर टाइम ये फीचर्स जो हैं वो मिड रेंज फ़ोन्स तक भी पहुंच जाते हैं, एज वेल एज अदर हाई एंड फ़ोन्स बाय डिफरेंट ब्रांड्स। सो जब आप एक लेटेस्ट P सीरीज़ फ़ोन ले रहे हो तो यू आर ट्रूली गेटिंग द मोस्ट एडवांस्ड एंड द मोस्ट फीचर पैक्ड कैमरा ऑफ इस टाइम। ये बात इस फ़ोन के अंदर भी सच है। दिस टाइम इसके अंदर एक पेंटा कैमरा सेटअप है। दिस मीन्स कि इसके पीछे 5 कैमरा लेंसेज हैं, और जिस तरह ये कैमरा काम करता है सो कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंस कि इसको एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी सारे आवर्स लग जाएंगे। इट्स नॉट रॉकेट साइंस बट इट माइट एज वेल बी। देयर इज सो मच गोइंग ऑन एंड देयर सो मेनी इंटरेस्टिंग मैकेनिक्स एट प्ले हियर कि आई थिंक द बेस्ट वे एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन हाउ दिस 5 lenses वर्क इज़ टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन DSLR कैमरा। सो जो आपके पास DSLR कैमरा होता है उसके ऊपर जिस टाइप की आपको फ़ोटो चाहिए उसको लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। यू हैव टू पिक द प्रॉपर लेंस, द प्रॉपर सेटिंग्स। So let's say if you want optical zoom, you need a telephoto lens, और उस telephoto lens के ऊपर you can adjust the amount of optical zoom. Let's say our 18mm on this lens is our wide angle, and this is the normal amount, and this is 3x and this is 10x. So what they did essentially in the phone, उन्होंने लेंस को in all different states के अंदर miniaturize किया and put it in the camera. So इस तरह through the wide angle lens, through the main lens, through the 3x and the 10x lens, you are able to get these different types of photos without any loss of quality. आप सोच रहे होंगे काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है 2x और 10x zoom. So what's special about this? The answer to that is those phones might have 2x और 10x, लेकिन जो कीवर्ड आप ढूंढ रहे हो वो है ऑप्टिकल। अगर वो ऑप्टिकल जूम नहीं दे रहे तो essentially they are just cropping in the photo from the main camera to 2x और 10x. जब आप क्रॉप करते हो इस तरह इमेज को, you don't get the proper depth. ऑप्टिकल जूम के साथ when you go through all these different focal lengths, you get the appropriate depth that you would get in a DSLR. This is why जो इस फ़ोन के अंदर ऑप्टिकल लेंस हैं they are so special. After 10x, you can even take the photos at 50x or even 100x with hybrid zoom. Hybrid zoom एक combination है optical zoom का और digital zoom का। अब DSLR पे वापस आते हैं। In the DSLR, let's say कि आपने एक portrait photo खींचनी है with very creamy blurry bokeh background.
उसके लिए आपको एक लेंस चाहिए जिसका अपर्चर बहुत ही ज़्यादा वाइड हो. You need something like 50 mm or 30 mm with an f1.4, 1.8 or 2.4 aperture to get that proper bokeh look. अब आप ये सारे अपर्चर्स फ़ोन पे भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि ये लेंसेज फिज़िकली बहुत छोटे हैं, दे डोंट गेट द सेम अमाउंट ऑफ लाइट जो कि आपको एक प्रॉपर 50 mm या 30 mm लेंस के अंदर मिलेगी. सो यू डोंट रियली गेट द प्रॉपर क्रीमी बुके जो कि आपको एक DSLR से मिलता है. दिस इज़ वेयर द TOF सेंसर कम्स इन. जो इस फ़ोन के अंदर TOF सेंसर है, इट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के दरमियान. इससे फ़ोन को सही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए. फिर फ़ोन जो है उस इंफॉर्मेशन से जो आपको DSLR के अंदर बुके मिलेगा उसको एम्यूलेट करता है. एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज़ गॉटन सो मच बेटर ओवर द ईयर कि अब एक नॉर्मल पर्सन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि जो एक आपने क्रीमी बुके के साथ फ़ोटो ली है वो फ़ोन से ली है या DSLR से. इसी वजह से ही दिस फ़ोन हैज़ अमेजिंग एज डिटेक्शन एंड द पोर्ट्रेट मोड इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. DSLR पे वापस जाते हैं. तो जब आप एक पोर्ट्रेट फ़ोटो लेते हो, इट डजंट नेसेसरी मीन कि हर लेंस के साथ आपको सेम बुके इफेक्ट मिलेगा. कुछ लेंसेज जो हैं वो डिस्टेंट लाइट्स को ओब्लीट सफ़ेयर्स के अंदर लेके आते हैं और कुछ प्रोलेट सफ़ेयर्स के अंदर. ये डिपेंड करता है कि आपके पास लेंस कौन सा है. सो इन दिस फ़ोन टू एम्यूलेट दैट यू हैव ऑल दीज डिफरेंट मोड्स इन द पोर्ट्रेट मोड. इससे आप किसी भी किस्म का बुके इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो. आई होप दिस एक्सप्लेन्स वाई दिस कैमरा इज़ द मोस्ट स्पेशल कैमरा राइट नाउ. और अभी तक हमने सिर्फ हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स के बारे में बात की है. वी हैव बेरली स्क्रैच्ड द सरफेस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन द सॉफ्टवेयर लेवल. लाइक फॉर एग्जांपल द कलर साइंस. ये फ़ोन जो है वो ट्रेडिशनल RGB कलर गैमेट पे डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ऑन RYB कलर गैमेट. एंड दिस इज़ द फर्स्ट कैमरा दैट यूजेज एन ऑक्टा PD ऑटो फोकस. लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन एसेंशली चाहिए वो ये है कि दिस फ़ोन इज़ एक्सट्रीमली क्विक टू फोकस. द कलर्स लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड यू कैन टेक प्रीटी मच एनी टाइप ऑफ फोटो दैट यू वांट. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इवन DSLR के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है इन चेंजिंग ऑल द लेंसेज एंड ऑल द स्टफ. लेकिन हियर इट्स एज ईजी एज प्रेसिंग अ बटन. जिसका फ्रंट कैमरा वो एक ड्यूल कैमरा सेटअप है. इसके अंदर एक 32 मेगापिक्सल मेन कैमरा और एक अनदर TOF सेंसर है. So you get all those amazing depth effects in the front camera as well. And the quality of the photos, they speak for themselves. So overall, this is the best smartphone camera that you can get right now. And I've been extremely happy and satisfied with this. Build quality के बारे में जब हम बात करते हैं तो Huawei flagship phones have always been top of the line. Material के अंदर, design के अंदर, वो हमेशा ही देखने के अंदर एंड फील के अंदर बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन इस दफ़ा ये फ़ोन दिस इज़ अ बिग लीप फॉरवर्ड इन बिल्ड क्वालिटी. इसकी दो वजह हैं. वन इज़ कि यूजुअली जो आप मोस्ट फ्लैगशिप फ़ोन आजकल देखते हो दे आर मेड ऑफ ग्लास, लेकिन इसके अंदर द बैक इज़ मेड ऑफ सिरेमिक. सिरेमिक इज़ सो मच स्ट्रॉन्गर दैन ग्लास. आप इसको ईजिली स्क्रैच नहीं कर सकते. इट रैंक्स एट 7 ऑन मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, जबकि ग्लास एंड अदर फ्लैगशिप फ़ोन्स आर एट लेवल 6. सो इवन अगर आप इसको ग्लास से स्क्रैच करने की कोशिश करो, इट्स गोइंग टू हैव ज़ीरो इम्पैक्ट ऑन द फ़ोन. और इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू रिफाइन सिरेमिक. सो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट दे वेंट टू इन ब्रिंग अस दिस लाइनअप ऑफ फ़ोन्स विद सिरेमिक बैक्स. दूसरी अचीवमेंट इस फ़ोन के अंदर ये है कि बाकी फ्लैगशिप फ़ोन्स की तरह द साइज ऑफ दिस फ़ोन आर कर्व्ड, लेकिन इन दिस फ़ोन इवन द बॉटम बेजल इज़ कर्व्ड. So even though इस फ़ोन के अंदर एक chin है, it gets hidden because of the curve. So when you're using a phone, it feels like there are no bezels in the phone and there's no chin. Obviously, when you have a phone जिसके सारे corners ही curved हैं, it's going to look aesthetically pleasing and very futury. लेकिन it does make the device more vulnerable. Like अगर आप इसको drop करते हो, there are more chances कि शीशा जो है वो टूट जाएगा और आराम से. एंड टू कॉम्बैट दैट, यानी इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो इस फ़ोन के कॉर्नर्स हैं वो स्लाइटली रेज्ड हैं और फ्रेम के साथ रीइंफोर्स्ड हैं. सो इवन इफ़ यू ड्रॉप द डिवाइस, पहले ग्राउंड के साथ जो चीज़ कॉन्टैक्ट में आएगी वो मेटल फ्रेम होगा और ग्लास नहीं होगा. इस तरह से यू गेट द प्रोटेक्शन दैट यू वुड गेट इन अ नॉर्मल फ़ोन. दिस इज़ अ फैंटास्टिक फीचर. इस तरह से आपको कम्प्लीटली बेजलेस स्क्रीन मिल जाती है एंड यू डोंट गेट द चिन एंड यू डोंट लूज मच इन प्रोटेक्शन. सो विन विन. ऑल दिस कम्बाइंड मेक्स द फ़ोन अ जॉय टू यूज़. It feels incredibly premium. ये फ़ोन सिर्फ 2 कलर्स के अंदर आता है, वाइट और ब्लैक. And this is perhaps my only complaint with the appearance of the phone. Huawei started this trend of having gradient back phones. Or over the years,
they have produced these gradient bags that look like a work of art, like something you would find at an abstract expressionism exhibit. So जब हम ये completely white bag उसके साथ compare करते हैं तो it feels like a bit bland. I'm not saying it looks bad, it looks fantastic और ये stand out करती है, but there's not as much flair to it that they used to have. Perhaps this is because कि ये ceramic bag है and I think it will be more difficult to add color to ceramic, especially gradient, than glass, but I would really love to have this phone with a gradient back. So overall, I absolutely love the build quality of this phone. मुझे इसकी build quality बहुत पसंद है. I hope कि more and more devices जो हैं ये curved chin और ये ceramic back को भी अपने features के अंदर include करें. I honestly think this is the best build quality you can get in a flagship phone right now. इस फ़ोन का डिस्प्ले एक 6.58 इंचेस OLED डिस्प्ले है और इसका रेजोल्यूशन 1200 by 2640 है. सो इट्स अबव 1080p लेकिन इट्स नॉट क्वाइट 2K. द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. काफ़ी शार्प है, काफ़ी क्रिस्प है और आल्सो ये एक HDR पैनल है. सो कलर्स लुक मोर सैचुरेटेड एंड वाइब्रेंट दैन योर नॉर्मल डिस्प्लेज. क्योंकि ये एक OLED डिस्प्ले है, द ब्लैक पोर्शंस आर कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ इन द स्क्रीन. सो आपको एक बहुत अच्छी कॉन्ट्रास्ट मिलती है. The display is so good, I want to watch pretty much everything I own on this. And you know what? I will. Pizza time. Watching movies, TV or even photos is a fantastic experience. और जो इस डिस्प्ले का biggest feature है वो ये है कि the refresh rate is 90 Hz. So the touchscreen experience is buttery smooth. It responds to your touch much faster than your traditional 60 Hz phone. ये इस तरह का फीचर है जिसको आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा to get the full idea. क्योंकि probably अगर आप ये वीडियो अपने फ़ोन पे देख रहे हो या TV पे देख रहे हो या wherever, you probably have a 60 Hz display there. So you're not going to get how that feels in a video. But trust me, having a faster refresh rate makes the phone feel so much more responsive and smoother. There's also an in-display fingerprint sensor in the phone and it's also quite fast. Overall, this is as good as it gets. The display is pretty much perfect. Performance-wise, this phone is absolutely packed. This has a top-of-the-line HUAWEI processor जो कि Kirin 990 है और इसके अंदर 5GB supported है. ये 256 और 512GB storage के साथ आता है with 8GB of RAM. Since the processor is an absolute powerhouse and the display is 90 Hz, there's absolutely no lag in the phone whatsoever. This is one of the few phones जिसके अंदर I didn't feel any lag, any stutter, not even a tiny bit of stutter. It's so fast and fluid and so much more responsive than normal phones. ये Android 10 और EMUI 10.1 के साथ आता है. And we already fixed the Google Play Services problem, so for me this is pretty much perfect when it comes to performance. If you need to know anything about me, वो ये है कि I love gesture navigation and I love when the phones have a good haptic feedback engine. ये दोनों features इस phone के अंदर बहुत अच्छी तरह से हैं. Again, because the phone is so smooth, navigating through the UI is buttery smooth. And the haptic feedback is dynamic, so you get different level of vibration doing different tasks. So जब आप notification shade के ऊपर swipe down करते हो, it feels like you're pressing a tiny spring. और जब आप कैमरा के अंदर zoom in करते हो, it feels like you're spinning a dial. Both of these things combined end up giving such a satisfying experience. और it goes without saying कि ये एक flagship processor है, so it handles every app and every game with ace. लास्टली बैटरी के बारे में बात करते हैं. इस फ़ोन के अंदर एक 4200 मिलियन पावर बैटरी है. सो इसको 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना इज़ नॉट एन इशू. और इसके साथ साथ इसके अंदर 40 वाट्स क्विक चार्जिंग है एंड 40 वाट्स वायरलेस चार्जिंग. सो वेदर आप विथ वायर या विदाउट वायर चार्ज कर रहे हो, इट्स गोइंग टू चार्ज रियली फास्ट. ऑल्सो इसके अंदर 27 वाट्स रिवर्स चार्जिंग भी है. सो आप इस फ़ोन से अपनी अदर डिवाइसेस भी चार्ज कर सकते हो रिलेटिवली फास्ट.
So in conclusion, this phone is a magnificent piece of engineering. इसके अंदर बहुत सारे इतने अमेजिंग फीचर्स हैं, द टॉप ऑफ द लाइन कैमरा, द टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले, कम्प्लीटली लैग फ्री परफॉर्मेंस, अ बैक मेड ऑफ सिरेमिक. लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो है गूगल एप्स. एंड इन दिस केस इट मेक्स मी रियली सैड. दिस फोन हैज़ द पोटेंशियल एंड द फीचर्स टू बी द परफेक्ट स्मार्टफोन इन द प्लेनेट राइट नाउ. और ये पॉलिटिक्स की वजह से एंड ये ड्रामा की वजह से इट्स बॉक डाउन. इवन दो आप इसके ऊपर गूगल एप्स रन कर सकते हो, a lot of the people aren't going to go to the effort to do that. और इसकी वजह से so many people won't be able to experience all the good things that this phone is giving, सिर्फ इस एक वजह से. So overall, I completely love this phone, but I'm sad by this situation. I hope कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि अब ख़त्म होने वाली है कि things go back to the way they were before. It really is sad that people are robbed of this exceptional experience. Thank you for watching. Please subscribe and I'll see you in the next one. Peace.